आत्मा नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई नो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? हमारी स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट कर रहा है, हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। सो अगेन वी आर बैक विद इंस्टिलिंग माइंड बॉडी सोल कॉन्सेप्ट विद द किड्स एंड वी हैव विद अस मॉडर्न मंक अंशुल। तो जैसे मैंने आपको इनके बारे में बताया, अंशुल जी को फाउंड शी इज अ फाउंडर ऑफ सोल स्कूल, जो ऑलरेडी लोगों को हेल्प करता है, डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से अपने अपनी सोल के ऊपर काम किया जाए। इसके साथ में शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ बिजनेस साइकोलॉजिस्ट, इवन मिस्टिक है। कुछ चीजें इनके में मिस्टिकल है क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आती जब तक आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलते हैं। एंड शी इज बीइंग हेल्पिंग अराउंड पीपल थ्रू आउट। So let's start, since we have welcomed her with the bottom of our heart, and I think all angels are together now कि ये सेशन हो, और ये सिर्फ आपके लिए व्यूअर्स, बिकॉज आप यदि नहीं होते तो ये सेशन भी नहीं होता। सो अंशुल जी, सो ये नमस्कार। सेशन, यस यस, नमस्कार। इतने देर का स्ट्रगल फाइनली काम आया हमारे। और अंशुल जी से हम बात करना चाहेंगे कि उनकी जर्नी मॉडर्न मंकी कैसे स्टार्ट हुई, ये इंस्पिरेशन कैसे मिला इन्हें, एंड देन विल गो टू द क्वेश्चन कि इंस्टिल कैसे करना है। Sure. Thank you, Romal ji. Thank you for having me on the platform. I'm really, really grateful. और नवरात्रि है तो ये और भी अच्छी चीज है that we are speaking to a lot of people. And for the viewers, I'm very sorry for what has happened. And it's a technical issue. हम कुछ नहीं इसके बारे में कर सकते. But I think it was meant to be, so it is happening any which ways. So very grateful for that. Thank you for having me on the platform. आपका सवाल था कि what is this journey all about? तो मैं छोटे इसमें आपको शायद बताने की कोशिश करती हूँ। मॉडर्न मंक मतलब जो मॉडर्न भी है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, मॉडर्न भी है एंड ट्राइंग टू बी detached also, having the monkful bliss in your modern lifestyle, उस चीज को किस तरीके से इंटीग्रेट साथ में कर सकते हैं और करना भी चाहिए to live a very happy enriched life. So my journey began when I was 11 years old. So it's been a very very long time. जब मेरा ये जर्नी शुरू हुआ था, आई थिंक 11 या 12 साल की मैं रही होंगी तब, जब चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें रैंडमली, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जाके कुछ चीज़ों को समझा है, बट आई थिंक विथ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स थिंग्स रियली कम अप and then you start experiencing things, and that is what has happened with me. Ever since I was a child, my giving healing to people began when I was 13. एंड विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हीलिंग आज के ज़माने में जिसको आप हीलिंग कहते हो, लाइक प्राणिक है, रेकी है, ईएफटी है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में यू लर्न एंड यू डू इट. बट आई बीन डूइंग दैट सिंस आई वाज 13 years old विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसको किस तरीके से आज के ज़माने में किया जाता है. So I've been very blessed like that. But धीरे धीरे करके I moved into that. Actually, that path chose me to be on it. So I was always on that path. Slowly and steadily learned a lot of lessons of life. I got myself educated in multiple fields. I got 3 masters, doing my PhD. All of those things are still happening, but at the same time, मेरा spiritual जो हम कहते हैं ना, अपने आप को समझने का जो जर्नी है, अपने आप से जो हील करने का जो जर्नी है, वो अपना और परमात्मा के बीच का जो जर्नी है, दैट इज व्हाट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी एंड दैट मेड मी स्टे ऑन द पाथ कंटिन्यूअसली. उसके बाद देन आई टुक अप हीलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी लोग पूछने लगे कि आप सर्टिफिकेशन है आपके पास, ऐसा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टार्टेड टू कम अप अबाउट 10-15 years back. And then I started to learn the actual theory that was being taught, only to realize I've been doing it for a very long time without really having the theoretical knowledge of it. That is why I say spiritual journey, and this journey of mine is not me choosing it. I think it has chosen me because it has been with me for multiple lifetimes. आप जैसे मैं कहती हूँ, हीलर्स आप सीख के हीलिंग नहीं कर सकते, आपके अंदर अगर वो हीलर हो तो आप सीख सकते हो. So वैसा वो journey, and spiritual journey, तो I think everybody is on the spiritual journey. You are a spirit being having a human experience. It's as simple as it is. बट कोई लोग ज़्यादा उसको ध्यान दे के उस जर्नी को समझते हैं, कोई लोग इग्नोर कर जाते हैं. एंड माई जर्नी हैज़ बीन वेरी कॉन्शियस. It has been towards it, and everything that I've gone through in my life has only moved towards that thing. And I think 5 or 6 years back in 2015, 14, 15 is when I decided to give up
the worldly attached life completely. I didn't want it. I didn't want to create a family of my own. Whatever I have, my duties are there, and hence I'm still in the modern world. And but I decided to completely put myself into what I'm doing right now, and the journey has been interesting, very challenging, extremely challenging, but and it is still continuing to be in many aspects of how things are happening in life and how you kind of deal with stuff. So that is what my crux of my journey is. And right now, um, we teach. I'm a professor in universities. I teach MBA students across the country. I mentor students. I have a center, like Romalji was saying, that that journey also was interesting, to create a center where you teach meditation, you teach healing, you teach NLP, do NLP, you do regressions, at the same time take workshops and communication. So that mixture and the Vedic wisdom. So we teach the Vedic wisdom. We are wanting to bring the Vedic understanding, and it's not religious. It's pure science, Vedic science, that you're trying to build in to the regular everyday modern life, to understand the spirituality that we can work with to create a balance in our life, to create that monkful bliss. Every person can have that, and that blend, that bridge between the two things is what my whole journey is about. And the pillars are belief systems तोड़ दो, जो भी आपके हैं. Your mind, you understand your mind. You work with love and forgiveness, and one of the major aspects is acceptance of whatever is happening around. So these are the pillars. That is the bridge, and that is my journey in a very short, crux manner. Wow. Isn't it, viewers, isn't it very interesting कि कुछ एक ऐसा कि किसी ने हमें चूज किया है, हमने किसी को नहीं. जनरली हम वाइस वर्सा सोचते हैं कि हम किसी को चूज कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम, आई वोंट से फर्स्ट टाइम, पर ऐसा सुनने को मिलना कि आई हैव बीन चोजन, इट्स समथिंग ग्रेट. And it's lovely to have you here, Anshulji, who has been working with different souls all together from past so many years. In this Navratri, what do you think, which is the most auspicious things? हम we all do puja, that is there, but सबसे auspicious चीज क्या होती है जो हम लोग इंस्टिल कर सकते हैं लोगों में ड्यूरिंग दिस फेज, जो बाकी के समय में नहीं हो पाएगा, इजीली हो जाता है इसमें? इजीली हो जाना, एक चीज हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन दिस नवरात्रि इज, जैसे माँ दुर्गा के 9 रूप है. हम काफी बार इन चीजों को व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं. एवरीबडी नोज की शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी, आप जितनी माता है, जो आप पहले कह रहे थे, इट्स ऑल अबाउट शक्ति. It's about feminine energy. It's about experiencing your feminine energy. But काफी बार लोगों को लगता है कि feminine energy मतलब अपने बारे में बोलना, या you take a stand or become a feminist. That is not what that energy is talking about. It is talking about आप अर्धनारी हो, तो आपके अंदर भी half masculine है, half feminine है. So you are trying to understand that feminine energy. और जब हम ध्यान करते हैं, आप शायद you probably do this too, and जब हम ध्यान करते हैं तब हम शक्ति को शिव की ओर ले जाते हैं. So we are actually building that energy upwards. So in this Navratra, if everybody can just focus on their shakti stages of our own body. मैं ये कहती हूँ कि instead of आप माता की पूजा करते हो, बट आप खुद के अंदर, फिर वो शायद पुरुष हो या स्त्री हो, it doesn't really matter, खुद के अंदर जो माता का स्थान है, निवास स्थान है, उन पे अगर हम ध्यान दें, तो I think that is something we can work. Our body will tell us a lot of things. That energy will tell us a lot of things we can actually integrate in our life. For example, मैं कह देती हूँ, अगर it will be easier to understand. आज सेकेंड डे है नवरात्र का, और आज की माता का नाम ब्रह्मचारिणी माता है. And she basically resides in our navel chakra, नाभि के वहां बैठती है जहाँ ब्रह्म कमल खुला था. तो if you look at her image, you will see she is the goddess of a sacrifice. She's a goddess of sati, so she gives everything away. She's wearing a white. She lets go of all the aspects of life. And if we can do that, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर संसार छोड़ना है, मैं ये कह रही हूँ कि अपने अंदर की जितनी भी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी नहीं हो, छोटी हो, स्मॉलेस्ट टू द स्मॉलेस्ट थिंग्स, इफ वी कैन लेट इट गो, अगर हम उसका त्याग कर पाए, कोई भी एक चीज पकड़, एनी, इवन इफ इट इज द रियली स्मॉल थिंग, इट्स फाइन, बिकॉज दैट विल बी इम्पोर्टेंट. अगर
एक एक करके हम उन प्रत्येक एवरी रूप का एक सिग्निफिकेंस, एक सिंबल है, अगर वो हम खुद के बॉडी पे यूज कर पाए इन दिस 9 days, it is going to be fantastic. I think if you can pray on yourself, she will reside in you. It is not about she praying and you praying and she's coming to your house. Your house is your body. Let her reside in you. That Shakti has to be in you. So let's build that up is what I think for this Navratra will be great. That's great. You know, we have been through this pandemic and we are still going through this pandemic. Hmm. And the most affected, I would say, the age group are the kids, our children, Hmm. especially from 5 to 15, where they cannot Correct. go out, cannot do anything. So, you know, in Hmm. this phase, everyone's internal journey has been shifted. People have moved from outward to inward. And Hmm. a lot of parents have faced this challenge. How do we instill the spirituality in kids? बच्चों को Hmm. स्पिरिचुअल कैसे बनाया जाए? योगा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन में आंख बंद करके बोलो करने के लिए बच्चे कर नहीं पाते हैं, बच्चे क्या हम बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से काम कैसे किया जाए उनके ऊपर, किस तरीके से ये सीड डाला जाए, किस तरह से सो किया जाए, इज व्हाट द क्वेश्चन इज। and how do we make the kids understand that we are not just this body is a temple, which is true, but we are beyond that, we are a soul too. How to make them this concept understand? Because वो horror movies देखे ना, उन्हें soul ना वो भटकती हुई आत्मा लगती है। ट्रू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, यही सवाल कि हम बच्चों में उसको इंस्टिल कैसे करें, व्हाट डू वी डू टू इंटीग्रेट दैट इन आवर चिल्ड्रन. Now the fact is, couple of things that as a parent we need to understand, that they will imitate what you do. Absolutely. Okay, so मैं जो भी करूंगी वो बच्चे वो आज नहीं तो कल धीरे 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 देख के वही करने लगेंगे. So the major issue over here is how you are treating yourself and your spiritual journey. If they see something is happening in आप उनको 100 अच्छी चीजें बता दो और आप करो गलत चीज, तो वो गलत ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे. Absolutely agreed. Because they will do what they are seeing. So the first step that needs to be worked on is the parent, not the children. Okay, the first step. सेकेंड स्टेप, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, पहले तो ये जो शब्द है स्पिरिचुअलिटी, लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट कि कुछ बैठ के ध्यान साधना, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए. ये थॉट प्रोसेस इज रियली रस्टिक इन सम मैनर. बिकॉज मैं अगर ध्यान करूं आंख बंद करके तो ही मैं स्पिरिचुअल हूं, दैट इज नॉट इवन अ करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट. स्पिरिचुअलिटी सिंपली वही है, इन सिंपल वर्ड्स में ये कह रही हूँ कि आप जब खुद के बारे में समझने की कोशिश करो एंड यू आर ग्रोइंग विद इट, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डिवाइन एनर्जी, दैट विल बी द जर्नी ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड जर्नी. सो आपको अगर बच्चों में वो इंस्टिल करना है तो आप स्ट्रेट अवे उनको ध्यान योगा में अगर आप डालते हो तो वो they will not get attracted, they'll repel. वो जिंदगी भर नहीं करेंगे वो चीज. So first of all, stop pushing them. It is not right. अगर आपको पुश किया जाए आपके will के against, तो even you will repel. So let's not do that. What first thing that you need to do is see आपके घर में आपका जो atmosphere of the house, what is it? Simple things to integrate is a gratitude prayer. खाने के समय जब हम खाना सर्व करते हैं, लोग कहते हैं कि नो ऐसा ऐसा कर लिया हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ लोग करते भी नहीं है. बट वाई आर वी डूइंग इट? ये धीरे जो आप उनको रिचुअल बताओगे, उस रिचुअल के पीछे का मीनिंग भी बताना चाहिए. इस तरीके से उनको क्यूरियोसिटी बिल्ड जब होगी तब वो स्पिरिचुअल जर्नी पे चले. बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी अबाउट योरसेल्फ. Unless and until you create a curiosity, अब आप क्यों खाने के वक्त आप हाथ जोड़ते हो? बिकॉज उसमें 6 प्रकार के, हमारे वैदिक इसमें 6 प्रकार के दुर्गुण आने लगते हैं खाने में जब तक वो टेबल पे आता है. पहले जो फार्मर बनाता है वो बेचारा बीमार गरीब है, वो करता है, उसको उसका पैसा नहीं मिलता, उसको दुख लगता है, वो अनाज चला जाता है. जो खरीदता है वो लालची है, उसका भी एनर्जी आ गया. जो रिटेल में पैकेजिंग करता है उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं, उनका भी एनर्जी आ गया. आप जाके खरीद रहे हो, आपका भी एनर्जी आ गया. जो बना रहा है
there are 6 types of energy that are involved into that. बाप रे. By the time you eat it, Anna, whatever you eat, you're going to become. So you are, even if you're eating a healthy fruit, but what is happening with that fruit throughout, by the time it is being on the tree to your table. And hence we pray कि आपका जो भी ये खाना मेरे यहाँ बन रहा है, जो मेरे टेबल पे है, उसको मैं नमन करती हूँ या करता हूँ. I'm sorry for whatever has happened. Please nourish me the way you can. That is why we nullify it. And that is important. So, so so that is what happens during the way you want to integrate spirituality. आप उनको चीजें बताओ, और ये चीज स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ध्यान करना है. उसके साथ आप ऐड करिए, फिर माइंडफुल ईटिंग ऐड करिए. अब माइंडफुलनेस ये बहुत इंग्लिश वर्ड है, आपने सुना होगा, लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड दिस वर्ड, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस. इट्स बेसिकली विपासना, जो अपने जो भी आप देख रहे हो उसको एक विशेष रूप से देखना. द इंग्लिश हैव टर्म्ड इट माइंडफुलनेस. इट इज जस्ट ध्यान लगाना. आप खाने पे भी ध्यान लगा रहे हो, चलने पे भी ध्यान लगा रहे हो, संगीत में भी ध्यान लगा रहे हो, ऐसी चीजों में उनको इंटीग्रेट करके देखिए. So that what will happen is when they become focused, their curiosity will increase about themselves. Can we ask our children, what are your thoughts, what are your emotions, what is triggering you? आपको गुस्सा आ रहा है, हम तो थप्पड़ लगा देते, इंडिया में तो लगा देते बच्चे. बट ये हम पूछे रहे कि आपको ये ट्रिगर कैसे हुआ. थप्पड़ लगा रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप यू नो योर चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द चाइल्ड इज डन, बट व्हाट इज रियली ट्रिगर्ड यू. It cannot be just that instant. No, it has to be a pile of incidences. Exactly. So you have to figure out where the child is, what the child is piling up. Or when you start questioning the child कि मुझे तेरा ट्रिगर बता, तो भले ट्रिगर ना भी हो, but the child will start thinking, अगर ट्रिगर नहीं है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर मुझे ट्रिगर नहीं है तो मुझे ये फीलिंग क्यों. ये क्यूरियोसिटी धीरे 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 करके अपना स्पिरिचुअल पाथ खुद, जब पानी बहुत हो जाएगा ना, तो वो बांध ऑटोमेटिक टूट के पानी बहने लगेगा, आपको उसमें कुछ करना. बट दीज स्मॉल थिंग्स लाइक इवन ग्रैटिट्यूड, गिविंग अंडरस्टैंडिंग, गिविंग लव एंड सेंडिंग हीलिंग टू अदर पीपल. हम इतना अपने आप के लिए हो गए, कॉम्पिटिशन इतना हो गया. It's all about me. It's about my work. It's about my this, about my everything. And the parents are showing that. We do not have दिल खुला नहीं है, हाथ खुला नहीं है, ना देने के लिए ना लेने के लिए. लेने के लिए, देने के लिए भी खुला नहीं है. Because we are asking for abundance, we are asking for wealth, we are asking for health, we are asking for love. That's the most asked thing for love. कि मुझे प्यार चाहिए, मगर आप ना प्यार देने के काबिल हो, ना प्यार लेने के काबिल. तो हमें काबिल बनना पड़ेगा कि आई एम केपेबल ऑफ बीइंग लव्ड. I'm okay to receive love. And these things you have to integrate in children through affirmations bolo, ya songs bolo, ya short stories bolo, but give meaning to their life. And that is a parent's responsibility, not a child's responsibility. Completely. So I agree with you what you say. It is just we need to raise the level of our kids in such a manner that they understand what spirituality is rather than ठोक पीट के उन्हें meditation या कुछ और करवाया जाए. ठोक पीट के आप कुछ नहीं कर सकते. It is not possible. They will repel. They will not go towards it. आज मान लेंगे क्योंकि आप उनको खाना पीना दे रहे हो, you know, you're giving them education, food and money, but after some time they will not like it. Absolutely. The moment they are into preteens age, when they start asking you क्यों करना है, क्या करना है, नहीं करूंगा तो क्या होगा, and that time you don't have answers for that. And moreover, you yourself has not been very clear that why are we doing it? How are you going to help your kids? That is again a question. Educating the parents is more important than educating the children. Exactly. And parents, they don't want to change themselves, they want to change their kids. ऐसा है कि रामायण में हमको दशरथ और कौशल्या नहीं बनना है, पर हमको राम जरूर चाहिए हमारे घर में. ये तो ये इशू है ना, मतलब मैं चेंज नहीं करूंगी, आप चेंज हो जाओ.
एंड विच इज नॉट पॉसिबल। घर में दशरथ और कौशल्या नहीं रहेगी तो राम भरत आएंगे राम कहाँ से, होगा राम ही नहीं, वो लक्ष्मण इट्स नॉट आएंगे कहाँ पॉसिबल, से? इट इज नॉट पॉसिबल. Absolutely. So, Anshul, while talking to you, I understood that कि हम खाने को ब्लेस करते हैं, हमें उसके पहले ऑलरेडी 6 एनर्जीज उसको अफेक्ट कर चुकी होती है। एंड और ये हमारे कल्चर में पहले से ही है कि हम लोग, कोई भी रिलीजन ले लो, वो खाने से पहले खाने को प्रेयर करता है। कोई भी रिलीजन आप ले लो, वेदर दे आर मुस्लिम्स, वेदर दे आर क्रिश्चियंस, वेदर दे आर हिंदूज, वेदर दे आर सिख्स, दे प्रे द फूड, यस. राइट? तो ग्रैटिट्यूड क्या सिर्फ खाने के लिए ही होनी चाहिए, नहीं. या इन ग्रैटिट्यूड को हम किन किन चीजों में इंस्टिल कर सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, आपने मुझे 1 ग्लास ऑफ वाटर दे दिया, थैंक यू, दैट इज अगेन अ ग्रैटिट्यूड। बट हमने थैंक यू वर्ड की जो महत्वता है वो इतनी हल्की कर दी है कि हमें एक्चुअली नहीं पता कि ग्रैटिट्यूड है क्या। एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारे जबान में वो अंग्रेज चले गए और थैंक यू और सॉरी छोड़ गए. दो चीजें हमारे पास छोड़ के, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, oh thanks so much. We don't really mean what we're saying, but we're saying it. But the actual meaning of thank you and being grateful, okay, जब हम किसी चीज के लिए grateful होते हैं तो हम genuinely from our heart we are being we are saying that I'm glad that this thing has come to me. So it is not just about food. Gratitude has to be done throughout the day. आप सुबह उठते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उठ रहे हो, यही बड़ी बात है. सो ट्रू, कोरोना ने ये जरूर सिखा दिया. हाँ, ये तो अभी तो सिखाई दिया काफी लोगों को, दैट उठ गए तो नहीं, पर इंसान की जो ये जो मेंटल स्टेट है ना, वो कुछ सालों में फिर भूल जाए. वो थोड़ा थोड़ा बीच में, बिकॉज that's how human minds work. But whoever can, please make sure that you instill this throughout your life. You get up. इसीलिए हम बोलते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शना. दिस इज बेसिकली वी आर सेइंग हमारे हाथों में देवियों का नाम है, but we are trying to say that every part, every point has your body instilled. जैसे हम पैर रखते हैं तो बोलते कि धरती को नमन. जब भी हम पहले, क्योंकि हम उस पर चलते हैं पूरा दिन, गिविंग ग्रैटिट्यूड. जब भी आप बेड से नीचे पैर रखते हो तो हम वंदन करते हैं कि भूमि को, क्योंकि पूरा दिन मैं उस पर चलूंगी. So we are actually saying sorry and saying thank you. We are saying thank you for living, for being able to live today. When you go to bed, that is why when children or elders, मैं ये कहती हूँ कि एक रिचुअल रखो सोने से पहले का. जब हाथ पैर धोते हो, you give a gratitude, you also instill some affirmations in your body, in your mind. And why it is so important सोने से पहले, जैसे हम बचपन में, ये मैंने शायद कहीं कहा भी था, शायद किसी वीडियो में, कि जब हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम सब जब जाते थे तब टीचर पूछती है कि नोटबुक आपकी रख दो होमवर्क करके, और आप क्या करते हो, सबसे नीचे ऐसे नीचे 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 you try to put it down, because that अगर आपका फर्स्ट होगा तो वो फर्स्ट टीचर चेक करेगी, उसका ध्यान ज्यादा रहेगा उस पर. सेम थिंग विद आवर माइंड. जो चीज लास्ट जाती है वो माइंड लास्ट फर्स्ट प्रोसेस करता है. And your body and your mind becomes that. Hence, when you sleep, a ritual is important. Have a gratitude for everything, and I say this across time and space. So I'm grateful for everything and everyone who's helped me throughout, knowingly or unknowingly, across time and space. So you are basically taking all the universes in mind. You're taking all the timelines in mind. So you're saying that. Then you're also saying, you are first of all, you are sorry, you're grateful, all of those things, Tabi. And then you say your affirmation, whatever you want to say for yourself. Again, this is a part of spiritual growth. Your mind will start understanding these aspects, and slowly वो दूसरे द्वार, जो दरवाजे होते हैं ना, वो खुलने लगेंगे. आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा. So true. You don't have to do it. It will happen naturally. You just have to be present there. The doors are there. You have to just go there. They'll open. They're automatic. जस्ट लाइक मॉल गेट्स, उनके सामने खड़े हो जाओ, वैसे खुल जाते हैं, उनको धक्का नहीं देना पड़ता. नहीं, आप बराबर चलोगे, वो चलेगा. अब आप यू आर आल्सो ऑन दैट व्हाट आर दोस थिंग्स कॉल्ड वॉकुलेटर्स, एस्केलेटर्स जैसा नहीं होता है वो,
एयरपोर्ट पे होता है, you just yes. stand there, put your foot, you will automatically be taken, but आप वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा। दैट इज ट्रू, वहां तक हमें जाना पड़ेगा, और जाने के वहाँ लिए ये कॉन्सेप्ट समझना भी कि दैट आई एम नॉट अ बॉडी, ये बहुत हम्म ज्यादा जरूरी है। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ बॉडी, बिकॉज हम जो भी चीज करते हैं अपने सेहत के लिए करते हैं, अपने बॉडी के लिए करते हैं, नरिशिंग भी बॉडी के लिए होता है, ब्यूटी भी बॉडी के लिए होता है, एवरीथिंग, you know, in and around you do it, it's for your body. Then what is the concept of soul? What is it? How do you make it understand? Moreover, make anybody understand? How do you understand that you are a soul, not just this body which you look around to? it's a very complicated topic that you're trying to question me on. I'll give you a very basic understanding of how you can understand you're not the body. So first, ये तो सभी कहते हैं ना कि शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर नश्वर है, नश्वर ऐसा है. है, all of that, we all know that. It is intelligently we know, we don't understand it. अगर understand सच में होता तो ये सवाल ही नहीं होता. So we intelligently, analytically, logically understand that this is what the truth is. Okay, so first things that, you know, if we really want to see that this is not the, आप सो के देखिए, lie down on a floor completely, put शवासन में दोनों हाथ ऐसे करके, दोनों पैर ऐसे spread करके like a starfish, lie down and feel your thoughts, feel your mind, feel whatever is happening without moving your body. Are you still there? You will say, "Huh, I'm still there." But why are you there? But you're not moving. So how are you there? That will prove that you still exist without being able to move your body. हम जब बोलते हैं your body, my body, I don't say I'm moving myself or I'm moving me. I'm moving my body. Let me take my hand away. Let me take my hand away. Let me cross my legs. Okay, so we already know somewhere that this is mine, this is not me. Okay, Got that the is point. one. And if you really have to ask what is it, then what is, तो काफी लोग फिर करते हैं, अच्छा तो फिर मैं क्या हूँ? मैंने कहा आप बोलिए ना, आप क्या हो? Are you the body? You are saying no, because that we've already crossed that thing off. Are you your name? अगर आपको बिना नाम से, अगर आपका नाम नहीं होता, अगर आपका नाम रोमल जी नहीं होता और मेरा नाम अंशुल नहीं होता, तो क्या आप और मैं नहीं होते? होते नहीं, फिर भी होते हैं. होते, तो नाम तो नहीं है. तो फिर और ऐसे कर करके जब हम उस चीज को काटते जाएंगे बहुत चीजों में कि ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बच जाएगा वो आप, और वो जो बच जाएगा वहां तक पहुंचने की आपकी पूरी जर्नी है. सो फ्रॉम द बॉडी टू योर चैतन्य, योर आत्मा, योर चेतना. इसलिए हम सोल नहीं, आई डोंट यूज द वर्ड सोल एज मच because it doesn't give justice to what, because in English we say soul, spirit is the same thing, but संस्कृत में वो वैसा नहीं है. चेतना आत्मा है. आप स्पिरिट, आप स्पिरिट को भी बोलते हो, स्पिरिट आप गोस्ट को भी बोलते हो, यू नो देयर आर स्पिरिट्स रोमिंग अराउंड, ये भी बोलते हो. सो जो क्लासिफिकेशन है, इट्स नॉट क्लियर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इंग्लिश डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ वोकैबुलरी टू एक्सप्लेन. इसीलिए हम चेतना बोलते हैं. चेतना एज इन जो अपने अंदर की जो चेतना है, जो मेरे अंदर है, वो दैट फ्लेम दैट मेक्स यू डू. अच्छा, आप सोच रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, करेक्ट? आप बात कर रहे हो या आपकी बात करवाई जा रही है आपके शरीर के थ्रू? और अगर आप शरीर के थ्रू आपसे बात, मेरे से बात करवाई जाए, तो करवा कौन रहा है? सोचने वाला क्वेश्चन है. तो जब when these kind of curiosities, these questions, when they come up, that is the time you'll be able to distinguish between you and your body. So true. I mean, इसके लिए काफी समय देना, आई वोंट से समय देना है, पर थोड़ा सा सजग रहना जरूरी है, थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है, अवेयर रहना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं. इट इज नॉट मी, इट इज my chetna who's doing it with me, or I'm getting that signals, or whatever it is. This is just an instrument which I'm using. Like, will you say that you are a car? No.
Your car is a vehicle who can take you from one place to another. You are not the vehicle. You are the driver of that vehicle. Similarly, your body is a driver to take you from one place to another. That is from your from for the purpose you have come for and for what you are going to. So that is for You that use a journey. very, very, very beautiful example. आपने बहुत ही सुंदर example दिया that you're a driver. Your car is your body and your spirituality is your fuel. आपको एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए आपको वो ईंधन, वो तेल, वो फ्यूल डालना पड़ेगा, which is your spirituality. That car will run and you are the driver who's taking help. With the help of the car, you are reaching to that place. Such a So beautiful example. so you cannot say you are a car. You are No, not a car. you're not a car. You're totally not a car. So that is what we need to understand, that we are not a body. We are far beyond that. And what is far आपको beyond इसमें that, we प्रॉब्लम need to पता है क्या understand. है रोमा जी? मैं एक चीज ये आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई वांट No, टू no, लाइक no. समथिंग कि फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं तो शरीर तो नश्वर है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्ही ने तो बोला है कुछ नहीं लेना देना. बट अंडरस्टैंड, अगर कार की मेंटेनेंस नहीं हुई ना तो कार कहीं नहीं ले जाएगा. True, true, true. Absolutely. अगर भी से वैसे उसका ख्याल ध्यान रखो. रखना जरूरी है. हाँ, जरूरी है क्योंकि दैट इज द बॉडी. योर बॉडी इज द व्हीकल फॉर यू टू रीच. विदाउट अ फिजिकल बॉडी आपकी स्पिरिट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो सकती. उसके लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट लगता है और उसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अंशुल जी, आर इन यू योर. देयर विद अस? हाँ, I'm there. So I यस. said physical body में ही काफी चीजें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे. फिर वो रिलेशनशिप हो, फिर वो तकलीफ हो, फिर वो सुख हो या दुख हो या दोनों के परे हो, वो भी आप बॉडी में हो तभी ही आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे. उसके बिना आप कर नहीं पाओगे. सो योर व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट अंडर एस्टिमेट इट. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट डोंट अंडर एस्टिमेट इट ईदर. So in this we have come to a very important thing. Let's, हमारी जो भी आधे घंटे की बात हुई है, let's wrap up in few points that we have said, कि हमने इन आधे घंटे में क्या बात की. We started with the very important question कि instill कैसा किया जाए seed. तो first point that you mentioned was कि पेरेंट्स ने पहले अपने आप को देखना चाहिए that what are they projecting, what are they doing. So बच्चों को कोई भी चीज आपसे ही सीखते हैं, so you need to be a role model. You need to see what are you doing. Second thing, to instill, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ एलिवेटर तक आना है, लिफ्ट अपने आप ऊपर लेके जाएगी. तो उसके लिए क्या आपको रॉ मटेरियल देना है? रॉ मटेरियल ये देना है कि आप किस तरीके से डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी वैल्यू सिस्टम बच्चों के अंदर इंटीग्रेट कर सके. जैसे कि ग्रैटिट्यूड है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द मॉर्निंग यू गेट अप द मॉर्निंग यू स्लीप. तो छोटे छोटे रिचुअल्स है. और ग्रैटिट्यूड मन से आना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट इंग्लिश वर्ड थैंक यू, बट यू हैव टू फील दैट वर्ड व्हेन यू से इट. And explain to them why you're doing what you're doing. It's very important. एग्जैक्टली. तर्क हो हर चीज का, एनालिसिस हो हर चीज का. सो आप कोई भी चीज, बिकॉज हमने ये जब शुरू किया था तो ये था कि इंस्टिलिंग माइंड, सोल एंड बॉडी कॉन्सेप्ट इन अ साइंटिफिक मैनर. तो ये अगर से साइंटिफिक है तो आपके बच्चे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे. तो आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए कि हम क्यों थैंक यू, व्हाई वी आर ग्रेटफुल टू, राइट. तो ये चीजें आपको बच्चों को बताना है. द मोमेंट यू दे डू इट विथ अवेयरनेस, दे आर मूविंग अप ऑटोमेटिकली. उसके लिए आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, वो पहुंच जाएंगे. देन वी केम टू द पॉइंट जहाँ पे हमने समझा कि व्हाट इज एग्जैक्टली सोल एंड बॉडी, इनके बीच का डिफरेंस क्या है. सो माई बॉडी इज अ व्हीकल फॉर मी टू ट्रेवल फॉर अ पर्पज. आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड for what I'm going to do, for the upliftment which I'm going to move forward to, right. तो इसके लिए व्हीकल का भी ध्यान रखना जरूरी है. तो शरीर को जो लगता है उसको देना है, बट हमें ये गलती नहीं करना है कि मैं कार हूं. मैं कार नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं, बट मुझे कार की जरूरत है इस जीवन काल में, ताकि मैं काफी सारे अनुभव ले सकूं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं. तो ये सारा हमारा आज का डिस्कशन हुआ. इसके साथ में ये भी एक चीज हमारे इसमें ये डिस्कस हुई कि हमारे अंदर ऑलरेडी ये शक्तियां हैं. उन शक्तियों को जागृत करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग फ्रॉम अ मोमेंट ऑफ थॉट, कि अगर से मैं गुस्सा हूं तो ये कौन सी चीज ने मुझे ट्रिगर किया है. अगर से मैं खुश हूं तो ये किस चीज की वजह से. ये यदि मेरे अंदर अवेयरनेस होती है तो हमारे अंदर
हम जो भी कर रहे हैं उसको जब हम सजगता से करते हैं, चेतना से करते हैं, तो ऑलरेडी हम एक ब्लिसफुल लाइफ जी रहे हैं, ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, जिसका मकसद ये है, जो जिस मकसद के लिए हम आए हैं। सो Absolutely. अंशुल जी, जो भी पॉइंट्स हमने समराइज किया, अदर से इसमें मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज ऐड ऑन। नहीं, you've done it very beautifully. सो विद दिस व्यूअर्स, आई एम श्योर आज आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और अंशुल जी का कि उन्होंने मुझे इतना सारा समय दिया, क्योंकि ये रहते बिजी है, आई वोंट से बिजी बट यस शी हैज सर्टेन कमिटमेंट्स। सो उनके कमिटमेंट्स में से उन्होंने हमें इतना समय निकाल के दिया, तो उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई में बॉटम ऑफ द हार्ट से है, और हमारे व्यूअर्स के तरफ से भी है कि जो भी चीज हमने इस सेशन में सीखी, इसका अगर से हम 10% भी कॉन्शियसली कर पाते हैं, तो आई थिंक नवरात्रि हम सभी के लिए सफल रहेगी, बहुत फलेगी। राइट? और बहुत फलेगी, आई एम श्योर। सो विद दिस नोट वी कम टू एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। आपके क्वेश्चन मैं अंशुल जी तक डेफिनेटली लेके जाऊंगी, और अंशुल जी उसका डेफिनेटली हमें आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए आप देख लीजिए और एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि कोई बार बातें एकदम से ध्यान नहीं आती है। वापस से इसे देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चन उठे तो डेफिनेटली वी आर देयर, नॉट वी, अंशुल जी इज देयर, शी इज मच मोर हाईली एडवांस्ड टू गिव योर ऑल आंसर्स। विद दिस, नमस्ते, टेक केयर एंड सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 7 दिनों के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मजे कीजिए, ये 9 दिन अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए, ठीक है? विल मीट यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।